Hello my dear students, welcome back for the next lecture. We were doing the fundamental forces in nature. In the previous lecture I have explained you about the gravitational force, which is a universal force. Today I will explain you the electromagnetic force. So today's topic is the electromagnetic force. It is also a fundamental force. Now see the word electromagnetic force. It means electro means charge and magnet means magnetic poles. Magnetic poles. So what you can say? You can say the electromagnetic force is the force between two charges. Or you can say is the force between two charges at rest. So if we are saying the charge, it is a force between two charges at rest, so this is called electrostatic force. Electrostatic force. You have a big lesson in class 12, electrostatic force. It is also defined as it is the force between two magnetic poles. It is called magnetic force. Magnetic force, sometimes also called magnetostatic force, but it is a magnetic force. Now see, here what I have written, it is the force between two charges. Yes, if the charges are at rest, we can say it's electrostatic force. But when the charges moves, they produce a magnetic field and they may lead to, if two charges are in motion, definitely they have the electrostatic force as well as they have the magnetic fields, and that magnetic fields can interact each other and produce a magnetic force. So simple, if you want to write in a single line, so you can write it is the force between two charges, that's all. Two charges. If it is at rest, electrostatic force. If it is in motion, it can have magnetic force, or you can have, if it is accelerated, it can have both the forces of both electric and magnetic fields. Once again, if the charge is at rest, it has electrostatic force. The force between the charges at rest is called electrostatic force. When the charges moves, they produce a magnetic field and they may have a interaction between them, and then they produce a magnetic force. If the charges are moving in a uniform velocity, then definitely they have a magnetic force. But if the charges are accelerating, so we have electromagnetic waves, so that is called electromagnetic. Then we can say electric field is producing a magnetic field and magnetic field is producing the electric field. Whatever I want to say, we cannot separate electric and magnetic effects. Electric and magnetic effects are or you can say inseparable. You cannot separate it. Electric and magnetic effects cannot be separated. Electric effects can give rise to magnetic effects, magnetic effects can give rise to electric effect. That's why what we are saying, electromagnetic force. Now all types of forces, कितनी आपने देखी, not all. जैसे for example you have a contact force. For example, contact force. Contact force में कौन से आते? Frictional force. This is a electromagnetic force. You can say then we have a tension in the string. Tension is also electromagnetic force. We have a normal reaction. Normal होता है हमारे पास normal force, or you can say normal force क्या होती है, which is perpendicular to the surface. ये बाद में बताएंगे आपको, at present में. Or you can say the force in a spring force. See, these forces, the contact force, the frictional, the tension,
normal force and the spring force, all these forces are derived from the electromagnetic force. कैसे ड्राइव हुई है? If you go into it, you will find, अगर हम स्प्रिंग की बात भी करें तो अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है वो थोड़ी बढ़ रही है. अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो कंप्रेस हो रहे हैं, तो इट मींस there is interaction between them and that is an electromagnetic force. तो all these four, टेंशन में भी अगर किसी थ्रेड को थ्रेड से हमने वेट लटकाया तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसका लेंथ इंक्रीज हो रही है. अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब उसके बीच में एटम्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थोड़ा दूर दूर हो रहे हैं. एनीवे, तो इफ यू गो इनटू इट यू विल फाइंड इट ऑल दीज आर बेसिकली derived from the electromagnetic force. So let me explain you the electrostatic force first. What is electrostatic force? So what is electromagnetic force? The force between the charges is called electromagnetic force. If it is at rest, then you can say it is electrostatic force. If the charges are in motion, then we have magnetic force, or you can have it can have both electric and magnetic forces. And electric effects or magnetic effects cannot be separated. They are correlated with each other. Now let's do electrostatic force. Electrostatic force is the force between shortcut में कर रहे हैं, between two charges. For example, एक सिस्टम है हमारे पास, this is सिस्टम, इसमें एक चार्ज है Q1, point charges between two point charges. मैं ये बताना चाहूंगा कि this electromagnetic force is not a universal force, क्योंकि ये point charges में लगती है. बड़े बड़े चार्जेस हो, इनका साइज बहुत बड़ा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस हो, जैसे एक बॉडी हो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, जिसपे भी पॉजिटिवली चार्ज हो, तो इस पे ये electrostatic force का फॉर्मूला लगाना मुश्किल होता है. It is only applicable to the point charges. You will study it in 12th class. तो ये अगर इनके बीच में separation distance r है, the force between two point charges is directly proportional to the product of the charges. See the symbol of charges, it is Q1, it is Q2. चार्ज का सिंबल Q होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली proportional to the square of the distance between them. It means the force, magnitude of the force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो जब इसे आप ओपन करेंगे, we will get some constant k, q1 q2 divided by r square. ये आप देख रहे हैं just like a gravitational law, ये भी उसके जैसे मिलता जुलता है. वहाँ masses थे, यहाँ पे charges हैं. वो that force was between two masses, this force is between two charges, and the charges are at rest. And this is k is a constant. हाँ, k की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught होती है, और इसकी वैल्यू 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2. कूलम is the SI unit of charge. कूलम चार्ज की SI यूनिट होती है. वो epsilon naught क्या है वो हम बाद में बताएंगे 12th में, बट फिर भी its value is 8.854 10⁻⁻12. इसको उल्टा कर लें, this is the value, and it's called absolute electrical permittivity of free space. So I am not going beyond this. इसके आगे नहीं जा रहा हूँ. You will study all these things in 12th. So this is the electrostatic force. इसका जो magnitude है, the magnitude of the force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And ये तो आपको पता ही है, like charges repel each other और unlike charges attract each other. अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे. अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो they will attract each other.
This is electrostatic force, the force between the two charges at rest. Now let's go to the magnetic force. Magnetic force भी ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम दो पोल्स ले लें, मैग्नेटिक पोल्स ले लें, और यू कैन से दो हमारे पास मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ, इसका साउथ। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो हम देते हैं उसको सिंबल m, और इसकी पोल स्ट्रेंथ का भी सिंबल देते हैं m। इट इज नॉट मास, इट इज पोल स्ट्रेंथ। अगर ये m1 है, ये m2 है, तो द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, अगर Fm लिख रहे हैं उसको, यहाँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हम इसको यहाँ Fm लिख लेते हैं। ये कितना होता है? Is directly proportional to product of the pole strengths m1, m2 and inversely proportional to the square of the distance between them. तो आपने जो डिस्टेंस लेना है इन दोनों के बीच में लेना है, इन मैग्नेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दिस इज r। और मैग्नेट में यू कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल फ्रॉम साउथ पोल। जब यहाँ पे भी नॉर्थ होगा वहां पे भी साउथ, उसके साथ साउथ हमेशा मिलेगा, इसलिए आपको सेंटर से डिस्टेंस लेना है, इस मैग्नेट के सेंटर से और इस मैग्नेट के सेंटर से। तो यहां पे भी आपको एक कांस्टेंट मिलेगा म्यू नॉट अपॉन, उस कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम्स में के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है, और दिस इज इक्वल्स टू तो दिस is equals to 10 raised to power minus 7. Anyway, k equals to m1 m2 divided by r square. What is k? K is a constant, mu naught is there. This is pole strengths. So these are similar, and you are seeing it. These two are similar to the formula for gravitational force. This is electrostatic force. This is a magnetic force. The force between two magnets. देखने में similar है. Now let's go for the characteristics. पहली बात तो ये है, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो डेफिनेशन हो जाएगी, फर्स्ट डेफ तो आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक, उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो ये जो मैंने बताया दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे आप? इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वेरी सिंपल। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलरली लाइक पोल्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल और नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस attract each other. This is the second property. The first one, this second is, third one is it obeys Newton's third law of motion. हाँ, this is very important. अगर एक चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज और ये चार्ज अगर इसको धक्का मार रहा है उस साइड जितनी फोर्स से, तो ये चार्ज उतनी ही फोर्स से इसको धक्का मारे, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। और अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर अपोजिट चार्ज है दे विल अट्रैक्ट, तो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक ही जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इफ इट इज 10 न्यूटन, इट इज आल्सो 10 न्यूटन। इट obeys Newton's second law of motion. It means force on 1 due to 2 is same as force on 2 due to 1, but negative in sign. It is in vectors. तो अभी आपको 11th क्लास में वेक्टर्स अभी कराया नहीं, so you will do it later on, but these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. It obeys Newton's third law. Fourth, it is stronger. It is stronger than gravitational force. Gravitational force is stronger. It is stronger than gravitational force. कितना stronger है? 10 raised to 36 times stronger. 10 raised to 36 times stronger. तो अगर हम प्रोटॉन की बीच में ले लें, ये प्रोटॉन है फॉर एग्जांपल,
दिस इज प्रोटॉन और दिस इज प्रोटॉन, डिस्टेंस कुछ भी रखें, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और इसी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, if distance is fixed, so you will find it electrostatic force is more stronger than gravitational force, and it is 10 raised to the 36 times stronger, or it is 10 raised to power minus 2 times the strong nuclear force. It is 10 raised to power minus 2 times the strong nuclear force. जो nuclear force है उससे थोड़ी सी weak है, 10 raised to minus 2 times, 1/100 times the nuclear force, strong nuclear force. Fifth one, it is strong, it is stronger force. It has a long range, काफी range इसका काफी ज्यादा है, up to you can say 10 raised to power, you can say minus 15 meters से लेके आप 10 raised to 14 ले लें, say 10 raised to power 28 meters तक है. In some books you will find it is infinite. आप पाएंगे कि ये infinite है, तो infinite भी हो सकता है, but it has a long range. कितना? न्यूक्लियस के बाहर से, न्यूक्लियस के थोड़ा अंदर, न्यूक्लियस जैसे एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से लेके काफी ब्रह्मांड तक, तो इट हैज इनफाइनाइट रेंज यू कैन से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, इट हैज अ लॉन्ग रेंज. डेफिनेटली द ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज है इससे भी ज्यादा है. इट हैज अ लॉन्ग रेंज, इट इज स्ट्रॉन्गर. सिक्स्थ वन, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर. It obeys inverse square law. Sixth one. It obeys inverse square law. What does it mean? It obeys inverse square law. Means that force is inversely proportional to r square. ये मैंने बताया. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स डिक्रीज होती है. Force inversely proportional to r square. Gravitational force भी ऐसे ही थे. It is conservative. It is a conservative force. ये मैंने पहले भी बताया. Conservative force वो forces होती हैं जो काम करती हैं. वो जो काम होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर, you can say, conservative forces. It is a conservative force. It is a central force. It is a central force. ये भी मैंने पहले बताया. They act from the center of a charged particle to center of and the charged particle. इसके बीच में it acts along the line joining the center of the first particle to the center of the second particle. Ninth one, the exchange particle. Yes, this is important. The exchange particle is photon. Photon का symbol ऐसा होता है. It has a zero charge, zero mass, zero rest mass. Now I will explain what this is. The exchange particle is photon. Now what is exchange particle? Now see here. मैंने अभी बताया आपको कि this is a force between two charges. Now अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, see this reaction. This is a negative charge electron plus positron. तो हमें क्या मिलेगा? 2 photons. This is very important reaction. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के साथ एनिहिलेट करें, जिसे कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ चार्ज. Annihilation of charge. तो this is the annihilation of charge. जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में स्ट्राइक करते हैं तो लाइट पैदा होती है. लाइट का what is photon? The packet of light. And light पैदा होती है, और ये this is the concept behind
लाइटनिंग, जितनी भी आप लाइटनिंग देखते हैं, स्पार्क देखते हैं, साउंड देखते हैं, तो ये जो एनर्जी है ये लिबरेट होती है। और कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिव राइज टू 1.02 mega electron. So this is the energy which liberates when electron annihilates with the positron. This is positron, the antiparticle of electron. At present, this is beyond your scope. अभी तो नहीं पढ़ रहे. But this was some characteristics of electromagnetic force. So once again, electromagnetic force मैंने बताया, it is a force between the two charges. It is not a universal force. It is not a universal force. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस के बीच में ही लगती है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशंस में नहीं लगती। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बताया कि अगर चार्जेस सेम हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो ओबेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे एक कितनी ही डालते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इट इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर है? 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और न्यूक्लियर फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर है? 10⁻⁻2 टाइम्स। तो न्यूक्लियर फोर्स से ये वीकर है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप रब करें, आप प्लास्टिक स्केल लें या प्लास्टिक पेन कोई भी लें, उसे हेयर के साथ रब करें, तो यू विल, और छोटे छोटे पेपर रखें, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, यू विल फाइंड ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पेपर है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसका मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को ये ओवरकम कर रहे हैं। तो पेपर और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो पेपर को अर्थ ने पकड़ कर रखा है, लेकिन दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। तो ये पेपर जो है ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द चार्ज्ड स्केल और ए कॉम्ब। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, बट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट हैज अ लॉन्ग रेंज, न्यूक्लियस के अंदर से लेके ब्रह्मांड तक 10⁻28 मीटर तक आप कह सकते हैं, एंड बियॉन्ड इट। In some books you will find it is infinite. Infinite is also okay. It obeys inverse square law. Force is inversely proportional to square distance. Distance बढ़ता है, force decrease होती है. It is a conservative force. ये जो काम करते हैं doesn't depend upon the path, but only depends upon initial and final positions. It is a central force, center to center act करती है, and the exchange particle is photon. जो exchange particle है इसके बीच में photon है. So before I conclude, I just want to give you the quantum. See, exchange particles से मुझे याद आया, I should give the quantum. ये मैंने पहले भी बताया आपको, electromagnetic. तो what is the quantum of charge? Quantum of charge क्या होता है? मैंने बताया था आपको एक दिन. Electron is the quantum of charge. And क्वांटम ऑफ मैग्नेटिज्म वो भी मैंने बताया था, बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो है क्वांटाइज्ड है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में मिलते हैं। तो चार्ज जो है उसका छोटा पैकेट क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिज्म इज आल्सो क्वांटाइज्ड, उसका छोटा पैकेट का नाम क्या है? बोर मैग्नेटॉन। और जो मैंने अभी थोड़ा पीछे बताया था, the contact force, tension, frictional force, normal force, and spring force are the examples of electromagnetic forces, and they are derived from the electromagnetic force, and most of the forces are derived from electromagnetic force. That's all for today. Thank you very much.